लेना कंपल्सरी होता है. So to understand the concept of the respiration rate, we have designed an instrument that is respiration monitor. We will show this instrument in the live session. Next is understanding of electromyograph. Electromyograph, as you know, that our body is made of different हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्वस सिस्टम्स होते हैं, वेन्स होती हैं. Then veins are working and that veins are generating some signals, and all the veins and all the nervous systems are directly connected through the brain with the spinal cord, and they are generating some signals, and their signals are sent to the brain, and then brain act करता है कि you have to do this task. So to understand those signals, electromyograph, we have the electromyograph. Then next is electroencephalograph. This is the EEG called, in the short form we call it EEG. ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो सारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, एंड इट डिसाइड्स एंड जब हमारा ब्रेन काम करता है, जब नॉर्मल ब्रेन काम करता है, कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स चेंज हो जाते हैं. So doctor can study that brain signals that is called on the simulator. So we have designed a instrument that's called EEG simulator. तो उन brain signals की study करके डॉक्टर ये निष्कर्ष पे निकलते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग पे निकलते हैं कि आपकी बॉडी के पार्ट में क्या प्रॉब्लम्स होंगे या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. In this way, doctor can study the paralysis, the strokes, and the other things related to the brain. Then next is study of phonocardiac system. Phonocardiac system is आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, when you visit a doctor for the any disease, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोग्राफ से आपकी बॉडी को चेस्ट के ऊपर या आपकी पीठ के ऊपर आपको सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है. तो वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो साउंड है, हार्ट साउंड है, जब हमारी बॉडी बीमार होती है या कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हमारा हार्ट का साउंड सबसे पहले चेंज होता है. जब सांस में तकलीफ होती है या कोई हार्ट की डिजीज होती है तो वो साउंड चेंज होते हैं, एंड ड्यू टू दैट साउंड डॉक्टर पता करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है. तो वी हैव द स्टडी ऑफ फोनोकार्डियल सिस्टम. देन नेक्स्ट इज हार्ट रेट मेजरमेंट. Transmission method. We have the two types of heart rate measurement. One is transmission method, and next is oscillatory method. Heart transmission method में हम लोग फिंगर टिप के ऊपर एक सेंसर प्लेस करते हैं. वो सेंसर आपकी बॉडी फिंगर टिप पे जाता है और एक अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करता है. वो वेव आपके ब्लड से कांटेक्ट करके आपके सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है. तो उसकी स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मेथड. And next is blood pressure measurement, that is called osmotic method. इसके अंदर हमारे आर्म के ऊपर, लेफ्ट आर्म के ऊपर, राइट आर्म के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं और फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट प्रेशर इज ऑब्जर्व. आपने जब देखा हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. तो वो parameters important in the blood pressure. Systolic pressure and diastolic pressure. The normal person का systolic pressure and diastolic pressure it should be 120/80. But due to any excessive work, due to any problem, due to any fever or due to any reason, यदि आपका blood pressure बढ़ता है या घटता है तो डॉक्टर कैन सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, and according to that डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको
हाई बीपी की प्रॉब्लम है या लो बीपी की प्रॉब्लम है, ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर डिजाइन द थिंग्स। यदि डॉक्टर को लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है एंड further test has to perform, then perform the further test. That is echocardiogram is second test. In that echocardiogram, what is happening? We are doctor performing a test on the all the four chambers of the heart to whether see that any problem is happening in the chamber of heart. If it's okay, then no problem. If there is, if doctor see or medical personnel see that there is something wrong in the chamber, then doctor अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। देन वो अलग यदि उनको लगता है कि इसके ऊपर कुछ टेस्ट करना है, देन prescribe the another test. Then we have another instrument of pacemaker simulator. So I want to introduce what is a pacemaker. First I want to introduce what is a pacemaker. A pacemaker, medical implantable device that is implanted inside the body near to the heart. जब क्या होता है कि जब इंसान के हार्ट में भी प्रॉब्लम होता है, यानी हार्ट इज फंक्शनिंग द कुछ गलत तरीके परफॉर्म करने लगा या उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, चाहे वो दिल की धड़कन बढ़ सकती है या घट सकती है, या हार्ट कई बार सिग्नल्स हमारे जो उसका जो मेंटेनेंस जो प्रॉपर नहीं है, तो पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं डॉक्टर। जहां भी हार्ट कोई पल्स मिस कर रहा है या जहां आपका हार्ट प्रॉपर्ली धड़क नहीं रहा है, एक पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं जो एक आर्टिफिशियल सिग्नल प्रोवाइड करता है हार्ट को। जहां भी पेसमेकर को लगता है कि ये हार्ट आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो वो एक आर्टिफिशियल सिग्नल प्रोवाइड करता है हार्ट को, और हार्ट उस कंडीशन में अगेन दोबारा धड़कना चालू कर देता है या उसकी धड़कनें कम या ज्यादा तो next is the आपको बताया था 12 ECG सिमुलेटर। तो ये इसका एडवांस मॉड्यूल है 12 ECG सिमुलेटर इन द वर्किंग में। ये रियल टाइम है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। Then study of 12 ECG, this is another instrument. Then working of medical ultrasound machine. टुडे जब हम डॉक्टर कोई पेशेंट चाहे लेडी हो चाहे कोई लेडी हो या कोई जेंट, यदि किसी उनको प्रॉब्लम हो रही है आपके एब्डोमिनल में, आपका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी को जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना फॉर द बेबी ग्रोथ, फॉर द फेटल ग्रोथ, की फेटली ग्रोथ कैसे होती है, फेटल की ग्रोथ कैसे होती है, तो दे परफॉर्म अ मेडिकल अल्ट्रासाउंड with the help of medical ultrasound machine. इसमें डॉक्टर देखते हैं कि जो फेटल है या आपकी बॉडी में जो आपके एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कि आपकी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपका पैनक्रियास हुआ, आपका स्लीव हुई, या जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपका जो स्टोमक है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज इस मेडिकल अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर वर्कआउट करते हैं। Then मल्टी पैरामीटर मॉनिटर। आप जब भी हॉस्पिटल, जो भी आप हॉस्पिटल्स गए होंगे वैसे एज ए पेशेंट, और आप अपने किसी हॉस्पिटल को विजिट किया होगा, आपने देखा होगा कि आईसीयू के अंदर यहाँ पे एक मशीन होती है जो डिफरेंट पैरामीटर्स रिकॉर्ड करती है, जैसे ब्लड ऑक्सीजन हुआ, आपका ब्लड प्रेशर हुआ, देन जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं रिकॉर्ड करके डॉक्टर वो उसको ऑनलाइन पेशेंट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं कि जो पेशेंट है उसका डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए, वो मॉनिटरिंग करने के लिए मल्टी पैरामीटर मॉनिटर मशीन होती है, दैट इज यूज्ड इन द आईसीयू एंड द मेडिकल फील्ड्स। तो एज आई टोल्ड यू, मैं शॉर्ट में स्टार्ट करता हूं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट रियल टाइम आपको दिखाने वाला हूं मैं। 2351 हार्ट रेट मॉनिटर, this year with the real time, so I will show you here in the real time way. अब जैसे मैंने कहा था this is 12-lead ECG simulator। डॉक्टर ECG परफॉर्म करते हैं तो
12 टाइप की ईसीजी वेवफॉर्म्स जनरेट होती हैं। तो उन वेवफॉर्म को सीधी स्टडी करने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तो पॉसिबल है कि आप रियल टाइम कर सके या रियल टाइम ऑपरेशन कर सके। सो वी हैव डिजाइन्ड अ 12 डीसी सिमुलेटर ताकि आप उन जो वेवफॉर्म है आप उनकी वेवफॉर्म का बॉडी पार्ट्स पे आप परफॉर्म कर सके। उनके अलग-अलग बॉडी पे क्या वेवफॉर्म जनरेट हो रही है, उनका बिहेवियर कैसा है वो परफॉर्म कर सके। तो फॉर दैट पर्पस we have one instrument that is called a 12 DC simulator. That next, this instrument is also in a working condition with us. We will show that real-time demonstration. Then understanding of my electromyograph. As I told you later, that in a body we have a different phase, different nerves, and they produces some electrical signals. When we are working, when we are in the rest condition, when we are in the working condition, they produce a different electromyograph signal. For the study of this signal, understanding of electromyograph signals is studied, designed. Then EEG signal to study the waveform to the wave signal of brain. We have designed this instrument. Then this is heart rate measurement, transmission method. This instrument we have the real time. We will show the demonstration. Then this is the sensor which is placed on the fingertip, and this is working of this instrument is that the ultrasound signals is passed on the blood, and from the blood the signal है वापस सिग्नल दोबारा ट्रांसमिट होते हैं और उन ट्रांसमिट सिग्नल को हम लोग कैप्चर करते हैं। देन फर्दर इंस्ट्रूमेंट में हम उसको यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग उसको फर्दर अलग-अलग ब्लॉक पे मैचिंग करके सिग्नल जो रीडिंग्स हम को इस एलईडी से कैप्चर करते हैं। देन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ऑसिलेटरी टाइप। आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर कप पहनाते हैं आपके लेफ्ट आर्म पे कप पहना के एक प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस प्रेशर में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होती है नर्व्स होती है उसको कुछ प्रेशर अप्लाई होता है और एक सर्टेन मोमेंट में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस प्रेशर को रिलीज करते हैं और जब प्रेशर अप्लाई करने के बाद रिलीज करते हैं तो दो पैरामीटर्स होते हैं। जहां प्रेशर रिलीज करते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ साउंड। उस साउंड को लेकर वो साउंड जहां स्टार्ट होता है और जहां वो साउंड एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है और ये साउंड बंद होता है तो उसके बीच में जो रीडिंग्स होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो इन दो पैरामीटर्स को हम लोग डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, दो पैरामीटर्स को नोट करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। Then this is pacemaker simulator. In the medical biomedical engineering, it is not possible to study the pacemaker in the real time. हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि हम रियल टाइम पेसमेकर किसी बॉडी पे इम्प्लांट करके उसके वेवफॉर्म्स का बिहेवियर का पता कर सके कि आपकी एब्नॉर्मलिटीज क्या है, हार्ट आपका फंक्शन कैसे कर रहा है, उसकी वर्किंग प्रॉपर है कि नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग आपकी लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट आर वेरी कॉस्टली एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द वर्किंग पेशेंट्स। आप किसी इंसान के ऊपर या किसी स्टूडेंट के ऊपर लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते। सो वी हैव डिजाइन्ड अ सिमुलेटर टू शो द इफेक्ट ऑफ दैट pacemaker, how pacemaker is working and what are the effect of the different waveform of the heart। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हार्ट होता है, हार्ट की जो 12 वेवफॉर्म्स होती हैं उन 12 वेवफॉर्म्स का जनरेशन एक ओके वेवफॉर्म मतलब हेल्दी वेवफॉर्म कैसी होती है, व्हाट आर द हेल्दी वेवफॉर्म्स। और यदि आपके चैम्बर्स में आपके हार्ट में इफ यू हैव एनी यदि नॉर्मल नहीं है तो क्या वेवफॉर्म में चेंजेस आता है, दैट चेंजेस यू कैन सी एंड हाउ दैट वेवफॉर्म्स हैव बीन करेक्टेड विद द यूज विद द हेल्प ऑफ पेसमेकर। ये सारी चीजें आप पेसमेकर सिमुलेटर से आप स्टडी कर सकते हैं। Then this is at working of ultrasound machine. We have designed
अल्ट्रासाउंड मशीन इन द बोथ वे, कि आपका अल्ट्रासाउंड मशीन का इनर पार्ट कि उसकी पावर सप्लाई सेक्शन कैसा होता है, इसका मदरबोर्ड कैसा होता है, दोनों एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट्स इसके ऊपर उसका रिपेयरिंग बेबी सीख ले कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन में और अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे काम करती है, ताकि उसका वो उसका हैंड्स ऑन कर सके। तो हमने इसमें रियल टाइम देके रखा है। थोड़ा मुश्किल ये होता है कि आपको स्टडी आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, आपको सारे पैरामीटर्स पता होना चाहिए, तो दैट कैन बी स्टडी इन दिस मशीन। तो ये उस मशीन के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं कि किस किस चीज की स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। यूटेरस में होता है, पेटल पेटल होता है न्यूबॉर्न बेबी, जो किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो पेटल पल रहा है, जो अंदर डेवलप हो रहा है, उसकी हार्ट बीट की स्टडी करने के लिए उसकी हार्ट बीट कैसी है, तो पेटल कैसे उसकी प्रॉपर ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम अल्ट्रासाउंड मशीन से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर है कि नहीं है, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है कि आपके हार्ट के वॉल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं है। जब किसी बेबी की ओवरी में प्रॉब्लम होती है तो उसकी ओवरी में क्या प्रॉब्लम्स होती है, दैट कैन आल्सो स्टडी विद द अल्ट्रासाउंड मशीन। तो अल्ट्रासाउंड मशीन स्टडी करने के लिए वी हैव डिजाइन दिस इंस्ट्रूमेंट। Then we have, last but not least, we have designed a biomedical electronic workstation। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब टॉप राइट में एक मशीन लगी हुई दैट इज कॉल्ड मल्टी पैरामीटर मॉनिटर। तो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर कैन बी स्टडी ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्कस्टेशन। दैट सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट आप चेंज कर सकते हैं। We have number of instruments। इस इंस्ट्रूमेंट को या इस इंस्ट्रूमेंट को हमने कस्टमाइज बनाया कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ये रिमूवेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट को इस वर्कबेंच पे स्टडी कर सकते हैं। हमने एक पावर सप्लाई इसमें दी हुई है कि यदि आप कोई रियल टाइम सर्किट डेवलप करना चाहते हैं, बायोमेडिकल सर्किट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। You can take that supply different supply from the power supply section। Then upper is we have given the arbitrary waveform generator। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग जो वेवफॉर्म्स होते हैं उनको रियल टाइम जनरेट कर सके, और हर बार पॉसिबल भी नहीं है कि आपका इंस्ट्रूमेंट रियल टाइम इंस्ट्रूमेंट्स हो। तो जो जनरेटर्स हो, आजकल ये मॉडर्न आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर्स होते हैं, वो इस तरह डिजाइन करे हैं कि उसमें बायोमेडिकल वेवफॉर्म्स इनबिल्ट होती है, डिफरेंट टाइप की बायोमेडिकल वेवफॉर्म्स होती है जो इनबिल्ट होती है। आप उन बायोमेडिकल वेवफॉर्म को जनरेट करके उनको आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सकते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर दोस पर्पस वी हैव गिवन अ आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर। We have given a PC for the different purpose you can use for the working of any software, and for the different waveform you can study on the PC। So thank you. This was from my side on the slide PPT। Now any question regarding this PPT, this presentation? यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन है, you can ask me। Hello. Thank you, sir, for the wonderful session and the insightful demonstration. We now move to an interactive question and answer session. Please feel free to submit your questions through the chat, and we will address them one by one. We have Any question from anyone of you? आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी मेडिकल से, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने के लिए। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आया, स्लाइड में कुछ चीज समझ में नहीं आया या कुछ और कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं। आप question from Mangesh Bogate।
How does the pacemaker differentiate between normal and abnormal heart rhythms? ओके, आपका क्वेश्चन है कि पेसमेकर कैसे वर्क करता है, एब्नॉर्मल है कि नॉर्मल है ना। पेसमेकर में क्या होता है कि पेसमेकर में एक सेंसिंग डिवाइस होता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे पहले डॉक्टर डायरेक्टली पेसमेकर इम्प्लांट नहीं करते बॉडी के अंदर, एक आरएसए का एक इंस्ट्रूमेंट होता है आरएसए, वो डॉक्टर पहले पेशेंट के ऊपर बाहर से लगाते हैं और डॉक्टर उसके ऊपर करीब 15 से 20 दिन उसके ऊपर लगा के डिफरेंट वेवफॉर्म्स टेस्ट करते हैं कि इस हार्ट जो बॉडी का जो पेशेंट का जो हार्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस पल्स की उसको कैसी पल्स की रिक्वायरमेंट है, उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसको कितनी इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको देना है, ये सारी चीज डॉक्टर एक एक्सटर्नल पेसमेकर का होता है, एक डिवाइस होता है, उसको पहले डॉक्टर बाहर से कनेक्ट करते हैं पेशेंट के ऊपर, उसपे 15 से 20 दिन स्टडी करते हैं कि उस कस्टमर की उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, देन वो सारी चीज को रिक्वायरमेंट को समझकर अच्छे तरह से नोट डाउन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेसमेकर को अंदर इम्प्लांट करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार पेसमेकर बॉडी में इम्प्लांट हुआ तो आप उसके पैरामीटर्स चेंज नहीं कर सकते। पेसमेकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो आपकी बॉडी के चेस्ट पे कनेक्ट करके जब उसको आप वर्क करते हैं तो जो भी आपका अंदर पेसमेकर है उस पेसमेकर के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर को लगता है कि चेंज करने की जरूरत है, वो सारे पेसमेकर के जो पैरामीटर्स वो चेंज कर सकते हैं। अब पेसमेकर काम कैसे करता है, पेसमेकर में सबसे पहले सर्किट होता है सेंसिंग सर्किट, वो आपकी एक उसमें पेसमेकर में दो तरह के होते हैं, सिंगल चैम्बर एंड डुअल चैम्बर। सिंगल चैम्बर वो भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर इट इज रिक्वायर्ड अ सिंगल चैम्बर और डुअल चैम्बर। ये सिंगल चैम्बर के रिक्वायरमेंट होते हैं, आपको पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर के दो जो चैम्बर्स होते हैं वो सिंगल कहलाते हैं, और नीचे के दो चैम्बर होते हैं वो वर्टिकल कहलाते हैं। तो डॉक्टर डिजाइन करता है कि पेशेंट को किस पेसमेकर की रिक्वायरमेंट है, सिंगल चैम्बर या डुअल चैम्बर। यदि सिंगल चैम्बर की रिक्वायरमेंट है तो सिंगल चैम्बर वाला लगाते हैं, और डुअल चैम्बर में दो वायर्स निकलते हैं जो दोनों चैम्बर्स में कनेक्ट करते हैं, अपर वाले में और लोअर वाले में, और वहां से दोनों को मॉनिटरिंग करते हैं कि उसके दोनों की जो बॉक्स है जो चैम्बर्स है वो काम कर रहे हैं और प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट वो सिग्नल जो सेंसिंग सर्किट जो वो सेंस करता है कि हार्ट के सिग्नल्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं आ रही है, फंक्शनिंग वीक तो नहीं हो रही है, या जो हार्ट है वो प्रॉपर सिग्नल प्रॉपर तरह से बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारे सेंसिंग सिग्नल का काम होता है, वो सेंस करता है। तो जहां पेसमेकर के सेंसिंग सिग्नल को लगता है कि आपका हार्ट पूरा हो रहा है, कम धड़क रहा है या ज्यादा धड़क रहा है, वो फौरन एक सेंसिंग सिग्नल वो कुछ सेंस करता है और आर्टिफिशियल सिग्नल भेजता है ताकि हार्ट आपका प्रॉपर वे में काम करने लगे। तो ये पेसमेकर काम होता है। और पेसमेकर जैसे मैंने कहा कि पेसमेकर जरूरी नहीं कि एक बार इम्प्लांट हो गया तो वो दोबारा आपको उसको पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं। डॉक्टर जब पेशेंट्स को हर साल भर में या 2 साल में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फॉर द रूटीन चेकअप, देन डॉक्टर डिसाइड कि आपका पैरामीटर्स चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। तो ये वर्किंग होती है पेसमेकर की। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक बार पेसमेकर लगने के बाद में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि पेसमेकर लगने के बाद सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है कि इन फ्यूचर यदि कस्टमर को या उस पेशेंट को सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है तो वो कभी भी सीटी स्कैन एमआरआई कभी भी एमआरआई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी में जो पेसमेकर फिट किया हुआ है, जो प्लेस किया हुआ है, इम्प्लांट करा हुआ है, दैट इज मेड ऑफ टाइटेनियम मटेरियल। और टाइटेनियम मटेरियल को इस तरह टेस्ट करा जाता है कि उसमें कोई लीकेज नहीं होता है, वो प्रॉपर्ली वर्किंग आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, आपके जो ब्लड होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिजाइन किया होता है। और आपकी बॉडी में कोई भी
ये खाली पेसमेकर की बात नहीं कर रहा, आपकी बॉडी में भी कोई भी जो इम्प्लांट्स होते हैं, मैकेनिकल इम्प्लांट्स होते हैं, कोई और आपकी बॉडी में कोई आपका आपकी बोन टूट गई है और आपकी बोन में यदि आपका कोई रॉड नहीं है या पेसमेकर डला है, तो आप फ्यूचर में कभी भी आप एमआरआई टेस्ट नहीं करा सकते हैं। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग्स। फिर डॉक्टर उस टाइम में फिर सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं। तो ये डिसएडवांटेज होता है पेसमेकर का। एनी क्वेश्चंस? हेलो, और कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ से? Hello. What is the life of pacemaker? Hello. Pardon? What are the types of pacemaker? आपका क्वेश्चन ये है ना कि टाइप्स ऑफ पेसमेकर। देखिए तीन टाइप के पेसमेकर आते हैं, दो टाइप के पेसमेकर आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी आपको मैंने बताया कि एक्सटर्नल पेसमेकर वो होता है जो डॉक्टर पेशेंट को बाहर रखकर पेशेंट को हॉस्पिटल में रखकर बाहर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, स्टडी करते हैं। और एक होता है इंटरनल पेसमेकर जो बॉडी में अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ पेसमेकर होते हैं। इंटरनल जो इम्प्लांट करते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, सिंगल चैम्बर एंड डुअल चैम्बर। एनी क्वेश्चंस? ये आप लोग फर्दर कंटिन्यू करें हमारे हैंड्स ऑन सेशन के ऊपर। Hello. Hello. Sir, please you can continue hands-on training. Hello. मैं कंटिन्यू करता हूं। Madam Zainab जैसे आपको मैंने बताया था कि ईसीजी सिमुलेटर के साथ में बोला मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है 12 ईसीजी सिमुलेटर। अरे हॅलो मॅम. मॅडम जेव्हा ते डेमो देतात आहे अनु आणि त्याच्यानंतर ते डेमो देणार आहेत आणि नंतर मॅडमला बोलू. ते मी तिकडून त्यासाठीच आलो. माझं भाषण हो. मी आज ते ह्या लोकांनी गडबड करून टाकली. काय करतात ती नाही, ती ऍप्टिट्यूड मध्ये पोरं बसले आहेत आणि इकडे पण सगळ्यासाठी मिस. ठीक आहे ना. एक सी है मॅडमला सांगा मैंने बड़े प्यार से उसको रखवाया है। तुम्ही भाषा बोले ना मतलब बिल्कुल ठीक है। चालू हो गया, तो इसको थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा, इसे नीचे ढिब्बा रख जा रहा है। स्टॉपिंग कैप्चर डिवाइस, सेलेक्ट न्यू कैप्चर डिवाइस। नहीं, ये वहां कुछ भी नहीं कर रहा था, वहां कुछ भी नहीं कर रहा था, वहां तो जैसा कैमरा रखा ठीक है।
हाँ तो वो तो रहा है सर, इसको ट्रेनर को ऐसा रखना पड़ेगा क्या? उसको नीचे रखना पड़ेगा सर, ये आपने उसको ऊपर रख दिया। हाँ ये सही है, ठीक है सर, इसके नीचे रखो, इसके नीचे। ठीक है सर। हाँ। कुछ करना क्या है? हेलो ये दिख रहा है कुछ? मैं हेलो हेलो मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो बोलिए। हम आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। आपको ये स्क्रीन पे कैमरा पे स्क्रीन, हाँ दिख रहा है। कैमरा और ऑसिलोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम। तो जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज 20 ECG simulator. So you can see the human patient, a patient बताया हुआ है। यहाँ पे आप करते हैं डॉक्टर जब ECG परफॉर्म करते हैं तो रियल टाइम इलेक्ट्रोड्स परफॉर्म प्लेस करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। तो वी हैव शोन इन दिस इमेज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रोड्स आर बीइंग प्लेस्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है लेफ्ट एंड राइट आर्म, both legs and the chest. There are 6 positions are there: V1, V2, V3, V4, V5 and V6. So ये जगह होती है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स प्लेस होते हैं for that 12 lead ECG. So as I told you in the biomedical engineering, it is not possible, biomedical department, it is not possible कि आप रियल टाइम पेशेंट के ऊपर ये परफॉर्म कर सकें. So study the 12 lead ECG simulator. We have designed this instrument. इसमें एक रोटरी नॉब दी हुई है जिसमें आप डिफरेंट जो सिमुलेटेड वेवफॉर्म्स है आपको ऑसिलोस्कोप पे आप बीएसओ पे देख सकते हैं. Here we have given 2 knobs. First is amplitude and that is pulse rate. Amplitude means जो आपका वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है उसका आप एम्पलीट्यूड भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो हार्ट रेट है, जो आपका रेट है, उस रेट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 2 knobs. यहाँ पे 2 स्विचेस हैं. यहाँ पे ये स्विचेस का काम है कि इन टोटल जो V1 से लेकर जो डिफरेंट नॉब्स दिए हुए हैं, जो वेवफॉर्म दिए उनको कंट्रोल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने ये 2 स्विचेस दिए हुए हैं. अभी राइट नाउ मैंने कनेक्ट किया हुआ है L1 के ऊपर, तो आप वेवफॉर्म देख सकते हैं इसके ऊपर. L1 पे आपको जो दिस इज द स्टैंडर्ड वेवफॉर्म और if you can hear the sound also, आपको एक साउंड भी आ रहा है. यहाँ पे एक LED ब्लिंक हो रहा है. This is LED is blinking and you can see आपका ये वेवफॉर्म ये चेंज हो रहा है. This is the waveform of the healthiest person. This is very basic waveform. Now I will connect this to the, I will change the different node or different place where the graph is taken. Next one is L2. So L2 and L3 are same. It is being placed on the waveform. All this waveform on the top. This mimic also. This is the waveform when the patient is in the good condition. If there is any, so this is the working of this instrument. And the main important part is this instrument can be clubbed with another instrument, that is Scientech 2351 as such a simulated waveform. I will show you in the next part.
Now, next instrument is Cytec 2351 ECG from heart rate monitor. First, I will explain the block diagram of this instrument. There is two modes in this instrument. One is RTM, means real-time mode, and second is simulated mode. In the simulated mode, we can connect this 2352A with this instrument to perform the experiment. So, block diagram is given. One LCD is given. In the LCD, there are three parameters are there. There are two knobs are given to set the bradycardia and tachycardia. In a healthy person, when there is a abnormality, किसी person heart में problems होती हैं, तो दो terms बहुत important होती है. First is bradycardia, that is lower heart rate, and second one is tachycardia, means high pulse rate. तो दोनों चीज को आप यहाँ पे create कर सकते हैं with the help of this knob. You can change the bradycardia limits and you can change the tachycardia limit with the help of this knob. जहाँ डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा, यदि चेंज करूँ तो यहाँ पे जो रीडिंग्स आप सेट करेंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज हो सकती है. यहाँ पे देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन है कि आपको ब्रैडीकार्डिया चेंज करना है या टैकीकार्डिया चेंज करना है या फिर आपको हार्ट रेट मेजरमेंट करना है. अभी मैं एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करता हूँ, उसको मैं रियल टाइम मोड में. अभी ऑसिलोस्कोप से मैंने 2352 को हटा दिया और रियल टाइम मोड में कनेक्ट कर रहा हूँ. देखिए अभी मैं कनेक्ट किया, आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ से मैंने एक पल्स रेट दी है. यहाँ पे अभी 30 वेवफॉर्म कनेक्ट करा है. Right now what I have done, we have given a lead to signal to this 2351 in the real time, in the real simulated mode. यहाँ पर मैंने जो ब्रैडीकार्डिया लिमिट रखी है 25 और टैकीकार्डिया लिमिट रखी है 94. तो यदि ये वेवफॉर्म जहाँ पे डिस्प्ले पे 1 मिनट टाइमर दिया हुआ है कि 1 मिनट के बाद में इससे कितनी पल्स आएगी, दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेट. तो आप उसमें तीनों कंडीशन परफॉर्म कर सकते हैं, और हेल्दी कंडीशन, ब्रैडीकार्डिया कंडीशन एंड टैकीकार्डिया कंडीशन. तो ये इंस्ट्रूमेंट, दोनों इंस्ट्रूमेंट साथ में क्लब हो सकते हैं. एंड अनदर मोड इज सिमुलेटेड मोड, रियल टाइम मोड. इन द रियल टाइम मोड वी हैव गिवन द these electrodes are given, and these electrodes can be placed on the right arm, left arm and right leg, and that condition is called 3-lead ECG waveform. तो आप रियल टाइम वेवफॉर्म ऑफ ऑसिलोस्कोप पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं.
now आपको आवाज आ रहा है मेरा ना? हेलो आ रहा है next instrument is respiration rate monitor. Same thing, same concept. Because I will explain the block. There is a input from sensor. This is a sensor we have to place on the abdomen. यहाँ पे आपको connect करना पड़ेगा. Then some blood bag is given or condition are there. In the healthy person, the respiration rate is around 12 to 18 beats per minute. When it is higher, it is called tachypnea, and when there is no breath is coming, when patient is taking no breath, that condition is called apnea. So both the things can be performed on this instrument. For this purpose, ये मैं अपने abdomen पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने इनपुट फ्रॉम सेंसर के ऊपर. Now I have connected, and here one LED is given. So when I am taking breath, this LED will glow. And in the same way, you can see the amplified waveform on the DSO. You can see on the DSO waveform is coming. Right now it is 0. Some pulse is coming. So इसलिए में आप इसमें 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं: apnea, tachypnea, and the disease waveform. Here also 1 minute timer is given. जैसे ही आप 1 मिनट आपका कंप्लीट होगा, 1 मिनट का एलईडी ग्लो हो जाएगा, तो यहाँ डिस्प्ले पे आपका रियल टाइम वैल्यू से आपको डिस्प्ले होगी कि 1 मिनट में आपने कितनी ब्रीथ ली. यदि ब्रीथ आपका लोअर है तो वो एपनिया कहलाएगा, और ये हायर है तो टेक्निक कहलाएगा. एंड बोथ द कंडीशन कैन बी फुलफिल. अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि सपोज इफ एनी पेशेंट इज नॉट नो मोर इन दिस वर्ल्ड, सो वो सांस नहीं ले पा रहा, उस कंडीशन में एपनिया कंडीशन होती है. दैट कंडीशन यू कैन क्रिएट, और उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मैं 10 सेकंड का टाइमर देता हूँ. 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का टाइमर है. यदि 10 सेकंड तक कोई ब्रीथ नहीं आएगी तो यहाँ पे एक एलईडी है एपनिया की, वो ग्लो हो जाएगी. यू कैन सी यहाँ पे एलईडी ग्लो हो गई है. 10 सेकंड तक कोई भी मुझे इनपुट्स नहीं मिला, कोई भी मैंने ब्रीथ नहीं लिए, तो मेरा ये यहाँ पे ब्रीथ और एक सेंसर की एलईडी ग्लो हो गई है. सिमिलर वे यहाँ पे एलईडी है टेक्निपिया की. यदि आपकी ब्रीथिंग हायर साइड को है, अबव देन जो आपने सेट वैल्यू करी, सपोज आपने सेट वैल्यू करी 20, और 20 के ऊपर ही आपकी रीडिंग जाती है, तो दिस एलईडी विल ग्लो. So in this way you can study the respiration rate monitor of a person, any patient. Any question? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इंस्ट्रूमेंट में? हेलो, No, sir. Continue, please. next instrument is heart rate measurement.
ट्रांसमिशन मेथड, ऐसा आई टोल्ड यू, ट्रांसमिशन मेथड में क्या होता है, एक सेंसर होता है, दिस इज अ सेंसर व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द फिंगर टिप, इस टाइप से फिंगर टिप पे प्लेस करते हैं, एंड इट इज प्लेस्ड टू द इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, थ्री मोड्स आते हैं, लो, मीडियम, हाई। इसका एक तरह से रिजोल्यूशन हो सकता है कि आप लो पे करेंगे तो ये बहुत जल्दी ये आप लो पे करते हैं तो बहुत ये कुछ रीडिंग्स लेगा और उस रीडिंग्स को कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देगा। यदि आप मीडियम पे करते हैं तो मीडियम पे कुछ सैंपल्स वैल्यू, मीडियम सैंपल्स वैल्यू देगा, आपको डिस्प्ले करेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। अभी मैंने लो पे करा हुआ है और जैसे अभी एलईडी ग्लो कर रहा है तो यहाँ पे स्टार्ट, आप देखिए स्टार्ट ब्लिंक कर रहा है, आपको दिखाई देगा इसके स्टार्ट एक ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा यहां से मैं, तो ये स्टार्ट का जो ब्लिंकिंग करने वाला मोड है वो ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद आपके यहाँ पे रीडिंग्स आएगी कि आपकी हार्ट रेट कितना है। तो यू कैन स्टडी इन दिस स्टेज द हार्ट रेट यूजिंग द ट्रांसमिशन मेथड। Yes, yes. What do you mean? Next one is blood pressure measurement, osmotic type. इसमें हम लोगों ने कप दिया हुआ है, दैट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म, यहाँ पे आपको प्लेस करना होता है जैसे डॉक्टर प्लेस करते हैं। बस डॉक्टर हम जो दिस इज मशीन इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड द डॉक्टर व्हिच आर यूजिंग अ मैकेनिकल मशीन, उसमें आपने देखा होगा कि एक बलून होता है, उस बलून में वो सांस से पहले एयर फिल करते हैं और उस एयर को धीरे धीरे स्क्रू होता है रिलीज करते हैं, और आपके हार्ट के पास आके उस साउंड सुनते हैं। तो उसमें बेसिकली करते क्या, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फिलिंग द एयर ऑन द दैट दिस कप एंड रिलीज दैट एयर, एंड व्हेन एयर इज रिलीजिंग, जब वो रिलीज करता है तो एक पर्टिकुलर साउंड जनरेट होना स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर रीडिंग के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक साउंड और सिस्टोलिक रीडिंग्स। और वो साउंड जहां तक आता है, जहां पे वो साउंड आना बंद हो जाता है वो डायस्टोलिक कंडीशन होती है। तो जो अपर रीडिंग है, अपर साउंड, जो लोअर साउंड है, तो उस वेवफॉर्म को, उस साउंड को रिकॉर्ड करते हैं और वो रीडिंग्स कहां से कहां तक है। सपोज 120 का आपका साउंड आना स्टार्ट हुआ और 80 पे आना आपका साउंड बंद हुआ, तो आपका जो हार्ट रेट होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा, दैट विल बी 120/80। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। बट दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सेम थिंग आप इसमें ही परफॉर्म कर सकते हैं। That arm has to place on the body and the connect to the, यहाँ पे आप आर्म को कनेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे आर्म कनेक्ट कर रहा हूं, वहां पे मैं आर्म कनेक्ट करने के साथ साथ we have given this stethoscope, and that stethoscope is connected to the input from transistors। यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है the same thing what is happening in the mechanical, you can do on this instrument also। और इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस तरह से करके उसको आपको प्लेस करना है डायरेक्टली यहाँ पे, एंड देन ये हेडफोन, इस हेडफोन को क्या कनेक्ट करना है, आपको ईयर पे आपको प्लग करना है और आपको इस को स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करता हूं मैं तो इसमें एयर फ्लो होना चालू होता है, इसमें प्रेशर बिल्ड होना चालू करता है और यहाँ पे रीडिंग्स आती है आपकी। और जब जैसे कहा कि प्रेशर रिलीज होता है, जब प्रेशर रिलीज होता है सर्टेन वैल्यू तक जाता है, तो सर्टेन वैल्यू होने के बाद आपका आपने जो हेडफोन कान पे लगाया हुआ है, आपको साउंड आना स्टार्ट होता है। वो साउंड जहां से स्टार्ट होता है और वो जहां साउंड बंद होता है,
that is called Karatov sound. आप यहाँ पे ग्राफ पे भी देख सकते हैं, ग्राफ पे आपको दिखाई दिया इस टाइप से, यहाँ प्लेस किया डॉक्टर ने, और ये साउंड जो कहला रहा है, दिस साउंड इज कॉल्ड Karatov sound. ये सारी चीजें आप इस इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पॉइंट्स के ऊपर आप ऑडियो का वेवफॉर्म देख सकते हैं, इसका वर्किंग वेवफॉर्म है, वो वर्किंग वेवफॉर्म देख सकते हैं इसके ऊपर। So in this way you can perform the blood pressure measurement unit oscillatory type. तो राइट नाउ इनका ब्लड प्रेशर समथिंग आया है 130/80 के आसपास, तो दिस इज ओके। मैम आपने जो इंस्ट्रूमेंट बताया तो सारे इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गए अभी। हेलो सर डीएसओ बाकी है। डीएसओ बताया था आपको मैं। डीएसओ में क्या है कि डीएसओ जनरेटर्स पावर सप्लाई, मैं ब्रीफ करता हूं आपको। मैं डीएसओ जनरेटर्स और पावर सप्लाई जितने भी होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, जब हम बात करते हैं, हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सर्विसिंग की बात कर रहे हैं, न्यू डिजाइन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो मस्ट थिंग होती है किसी लेबोरेटरी में, दैट इज कॉल्ड डीएसओ, टेस्टिंग एंड मैचिंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब हम बायोमेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं तो बायोमेडिकल फील्ड में भी न्यू डेवलपमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज डीएसओ, आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर्स, पावर सप्लाई, मल्टीमीटर्स एंड सो ऑन, जो डिजाइनिंग करते हुए काम आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज रिगोर 1054Z, इट इज अ 4-channel डीएसओ and one generator we have So we have one this is an advanced orbital waveform generator of 25 megahertz and one oscilloscope 100 megahertz. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा डीएसओ में ब्रीफ कर दूं कि डीएसओ में कोई भी इंडस्ट्री में डीएसओ इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वोल्टेज, वेवफॉर्म्स, एक्सपायर मोड एंड ऑल दिस थिंग कैन बी मेजर्ड ऑन दिस डीएसओ। तो डीएसओ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनका सैंपलिंग रेट अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होता है, बैंडविड्थ अलग होता है, एंड डिपेंड ऑन द योर नीड डीएसओ इज सजेस्टेड। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको डीएसओ चूज करना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। देन दिस इज अ रिगोर DG82 Pro 25 मेगाहर्ट्ज जनरेटर। इस अभी राइट नाउ मैंने वेवफॉर्म भी यहाँ पे साइन वेव यहाँ अप्लाई कर रहा है मैंने आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें दिस इज 2-channel आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर
विद अ काउंटर, इनबिल्ट काउंटर। यदि आप इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इसके अंदर। अभी आपसे मैंने कहा था कि बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट में रहते हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप या तो आपको लाइव पेशेंट चाहिए जिससे आप वेवफॉर्म डिफरेंट वेवफॉर्म रिकॉर्ड मेजर कर सकें, या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लेकिन जब आप कोई बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, तो आपको उस डिसीज को जनरेट करना पड़ता है ताकि आप इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सके। तो इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट आर्बिट्री वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें बायोमेडिकल वेवफॉर्म की कुछ इसमें इसके अंदर इनबिल्ट कोई बायोमेडिकल वेवफॉर्म नहीं है अभी राइट नाउ, मैं इसको सर्च नहीं कर पाऊँ कहाँ पर है। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप अपने डिपार्टमेंट में डिफरेंट वेवफॉर्म, बायोमेडिकल वेवफॉर्म जनरेट करके उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिजाइनिंग द न्यू इंस्ट्रूमेंट। So these all are instrument testing and measuring instruments are very useful in any department to develop the new instrument, to perform your experiment, to analyze your circuitry. All these instruments are very required. Apart from these power supplies, multimeters, frequency counters, all these instruments come into the TMI categories, which is very mandatory in any electronic electrical industries or any designing industries. So ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। आपको कुछ और जानना है इसके बारे में? हेलो मैम। हाँ सर। आपका कुछ क्वेरीज हो उसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं इसमें। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वो डीएसओ सबको पता होना चाहिए इसलिए बोला था। मतलब डीएसओ का डिटेल चाहिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन? डेमो यानी वो उसके जो ये है प्रेजेंटेशन, उसके बारे में जो भी यानी बच्चों को पता होना चाहिए वो बातें चाहिए थी उसमें। अच्छा ठीक है, बता रहा था, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। देखिए डीएसओ में बेसिकली मैंने बताया कि डीएसओ डिफरेंट टाइप के होते हैं। डुअल चैनल, 2 चैनल डीएसओ होते हैं, 4 चैनल डीएसओ होते हैं, 6 चैनल डीएसओ होते हैं, 8 चैनल डीएसओ होते हैं। वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है। जैसे अभी वाला डीएसओ 4 चैनल डीएसओ है, इसमें आप जैसे प्रेस करते हैं यहाँ पे तो आप डिफरेंट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। इसकी कपलिंग सेट कर सकते हैं, इसकी प्रॉप सेट कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रोविजन है कि इसका वोल्ट पर डिवीजन कम कर सकते हैं। वोल्ट पर डिवीजन बेसिकली क्या होता है, या आप कोई डीएसओ का कोई अननोन सिग्नल देते हैं तो उसको मेजर करने का तरीका होता है कि हॉरिजॉन्टल में 10 ब्लॉक्स होते हैं और वर्टिकल में 8 ब्लॉक्स होते हैं। तो वर्टिकल में अपर साइड के 4 ब्लॉक पॉजिटिव और नीचे वाले 4 ब्लॉक नेगेटिव होते हैं, और उनसे आप कैलकुलेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ अभी मैंने साइन वेव दी है, इस साइन वेव का एम्पलीट्यूड कितना मुझे पता करना है, तो मुझे सिंपली इसके ब्लॉक्स गिनना पड़ेंगे। कितने ब्लॉक यहाँ पे 1 2 3 4 5 करीब 5.2 ब्लॉक्स है, और ये इसका टाइमिंग है यहाँ पे ये 1 वोल्ट पे रखा हुआ है। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये सिग्नल जो आपका 5 वोल्ट का सिग्नल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले या डीएसओ 5 वोल्ट के आसपास दिख रहा है। यदि मैं चेंज करता हूं, मैं 10 पर पीक टू पीक करता हूं, मैं ये मेरा चेंज हो जाएगा, और इसको मैं स्केल चेंज करके यहाँ पे देख सकता हूं मैं। अब कितना डिवीजन कवर कर रहा है मेरा ये, दैट इज 2 डिवीजन कवर कर रहा है, और आपका स्केल है 5 वोल्ट का, तो 5 into 2 इट इज 10 वोल्ट। सिमिलर आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए आपको 2 कंसेक्यूटिव साइकिल को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे आप चाहे तो ये 2 पीक ले लीजिए, या 2 डाउन की पीक ले लीजिए, या सेंटर से ले लीजिए।
मैं इस पीक से कैलकुलेट करता हूं, मैं ये 2 पीक का कैलकुलेट करता हूं, यहाँ दिस वन ये 2 पीक का टाइमिंग कैलकुलेट करता हूं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिवीजन कवर करा है। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डिवीजन आ रहे हैं, 1 और 2, और यहाँ पे टाइमलेस का स्केल है मेरा 500 माइक्रोसेकंड। तो 500 माइक्रो एक किस वैल्यू पे है, कर्सर बी किस वैल्यू पे है, दोनों का डिफरेंस कितना है और दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। सिमिलरली आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो 2 वर्टिकल कर्सर हैं, इन कर्सर को यूज करके आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कर्सर को वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे तो इस कर्सर को आप ये लेके आएंगे, फर्स्ट वाले को यहाँ पे और सेकंड वाले को यहाँ पे। इस पीक के वोल्टेज कितना है वो वोल्टेज कर सकते हैं, तो मैनुअल कर्सर यूज करके भी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि आपने कोई 2 चैनल अप्लाई करे हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस मेजर करना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे फेज डिफरेंस दिया चैनल 1 चैनल 2 के बीच में, फेज एंड लैगिंग फेज, वो दोनों फेज डिफरेंस आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी अभी एडवांस डीएसओ आ रहे हैं प्लस काफी सारे मेजरमेंट के फीचर है, दैट इज यूजफुल इन द टेस्टिंग एंड मेजरिंग लेबोरेटरीज। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, स्टोरेज कैपेबिलिटीज है, यूटिलिटी में आप चेंज कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं, टाइम बेस में चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसको दोनों पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं, आप देखिए इसके अंदर अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस जूम इन फैसिलिटी यहाँ दी है कि आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ब्लू के बीच में पोर्शन, तो इस ब्लैक पोर्शन को उसने जूम इन कर दिया है। तो ये फीचर वहां पर कहाँ काम आता है, यदि आपको लग रहा है कि आपका जो आपने इनपुट वेवफॉर्म आपके आ रही है उस वेवफॉर्म में कोई नॉइज है, कोई ग्लिच है, आपको उसको स्टडी करना है, तो आपको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को आप पर्टिकुलर किसी भी एरिया को जूम इन कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई नॉइज है, ग्लिच है, तो स्टडी करने के लिए फीचर आपका बहुत यूजफुल है। देन यूटिलिटी में बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, साउंड, आप साउंड किसका एनेबल कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, और इसमें आप प्रिंटर एक ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शनल फीचर, दैट इज ऑप्शनल फीचर दिया आपको इसके साथ प्रिंटर कनेक्ट करना है कि आप डायरेक्टली वेवफॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक स्पेशल प्रिंटर आता है दैट इज कॉल्ड कनेक्ट द प्रिंटर टू दिस डिवाइस एंड डायरेक्टली टेक आउट द प्रिंटर आउट ऑफ द सीन। Apart from that, you can store the waveforms, जितनी waveforms हैं, उन waveforms को आप अलग-अलग फॉर्मेट्स में आप सेव कर सकते हैं, BMP फॉर्मेट, CSV फॉर्मेट, .jpg एंड अलग-अलग .wfm फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उन फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू नीड आप अपनी लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं। आपको .csv फॉर्मेट में सेव करना है, तो आप .csv फॉर्मेट में सेव करके उसको एक्सेल पे ओपन कर सकते हैं।
और हेलो WFM फॉर्मेट ओपन करना है तो आप सर BSO को ओपन कर सकते हैं. यस मैम बोलिए. सर प्लीज कंक्लूड द सेशन. ओके मैम, तो ये मेरा हाँ. जो था इसके अंदर जो मेरा हाँ. क्वेश्चन था. अब प्रशांत स्टार्ट करेंगे आपका IIT वाला है इंस्ट्रूमेंटेशन वाला क्वेश्चन. ओके, थैंक यू मैम फॉर टाइम, फॉर वैल्यूएबल टाइम. सर थैंक यू सो मच. Hello. 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 मैम आपको आवाज आ रही है प्रशांत की? Hello. मैम Hello. Hello. नो प्रॉब्लम. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके, तो मैम अभी प्रशांत का सेशन स्टार्ट हो रहा है. आपको आवाज आ रही है प्रशांत की? तो मैम आप प्लीज एक्नॉलेज कर दीजिए. बोल. Hello. हाँ मैम इको आपके यहाँ से आ रहा है. Hello. ठीक है आपको हो गया. Prashant, we will take a session of the Scientech new products. We see that Scientech 2485, workbench of industrial IoT. IoT is a very important thing in the automation. It's a very new technology. We are working on that. We are developers of workbench of that IoT workbench. You see that this is your developed by the Scientech. This is IoT workbench. You see that this workbench. You see that the one MCP are here and one energy meter are there. The energy measurement of the all workbench. This is a one PLC are there, and then this is one industrial Ethernet which are there. Then there are the one HMI, 7 HMI are there. कहां निकल रहा है? हाँ ठीक है. And this is a IoT gateway. This is one PFD. This setup is a complete setup for the automation. This setup is included like your PLC, and you can user can student can learn how to PLC program. And many industries are used like a PLC, HMI, SCADA, PLC. So in this workbench, user can understand how to PLC programming, to PLC programming, how to do your HMI programming, and how to work on the cloud SCADA, and how to send your data to your cloud, and how to control your BFD, and how to different types of communication protocols like Modbus, Internet, how to control it. So in this Scientech 2485 IoT workbench, we can understand that how to control your process, and how to send your data to cloud, and you are controlling your many processes. We are given one induction motor for that. We are using a PLC and HMI, and we can control the speed of motor on off, and speed control of motor. And also using a mobile app,
or cloud, we can control a motor speed and motor position. We can control it. And this workbench is also the very good features of that. You can control your voice to control a motor. Okay. Then you see that this is like your some learning outcomes of that. You can study of the PLC what is the understanding of IoT and its component. You know how to learn that PLC from scratch PLC programming, HMI programming, and how to develop a BFD and how the BFD can work. And you see that the how to cloud is part of work and how to can be remotely to control the process. And this is one AI application of there that you can control your motor, speed control, and on off using a gesture control. This is the feature of the AI. And you then the second part to control your induction motor and adjust the speed of motor using a voice command. This is our next product, Syntec 2484 PLC controlled multi-process workbench. This is a very useful for the process automation industries. Like in this workbench, we can include temperature control, level control, flow control, and pressure control using a PLC and HMI. And also control using a mobile app. This is, you can say that this workbench is IoT enabled. In this workbench, you are included a temperature sensor, temperature transmitter, flow sensor, flow transmitter, pressure sensor, pressure transmitter, or level sensor, level transmitter, and different type of BFD to control a process. Student can learn how to control your process using a PID and what is the effect of PID in process control. This is some feature of this workbench. And this is our workbench is Syntec 2482 multi PLC workbench. This workbench is included 9 type of PLC. Every PLC having a on PLC programming software. So we are provided a single platform. We are provided a 9 PLC. They can student can learn how to program PLC through their own software. And they are designed. We like a Mitsubishi PLC are there. Schneider PLC are there. Big brands are PLC of there. Like a Mitsubishi PLC, Omron PLC, Schneider PLC, NL Bradley PLC, ABB PLC, Fedec है और Siemens है, then Delta. Our PLC are in a single platform. The 9 PLC are available. User can understand how to program different PLC, different types of software or different types of make. This is some technical specification of there. This is our product Syntec 2425 RP, HMI based PLC process training unit. In this training system, user student can learn how to PLC program and how to HMI design, HMI screen design, and how to communicate PLC and HMI, and how to control your conveyor system using a PLC and HMI screen, and how to this system is included. You can see that the one control panel are there, one conveyor system are there. In conveyor system are there, one ADC motor are there with the driver, and 3 types of photoelectric sensor are there, and fiber optic sensor are there. You can control your conveyor speed control using a PLC and HMI, and you can you can write any ladder program using according to you. This is something learning outcome of this product. This is our Syntec 2482 PLC controlled electro-pneumatic training platform. This training platform is very useful for the student who can learn the pneumatic different type of sensor, sorting of process, and using a PLC. This is PLC programming with 3D factory simulation software. This is a simulation software. User you can control your PLC. You can learn how to control your industry to your PLC data program. We see that this software. This is 21 process on this software. We can see that this is Syntec 2311 industrial sensor. This is different types of sensor like photoelectric sensor,
diffuse reflective sensor, fiber optic sensor, photoelectric sensor, inductive sensor, capacity sensor, metallic sensor. Different types of sensors are available on this single board. You can connect with this control panel and how to see and interface with the PLC. Also, we can see that this is one 3D factory simulation software are there. We can see that the student can learn how to design an industrial process like in an industrial environment and how to control using your ladder program with this software. User can design on scenario. This is an inbuilt scenario in this software. 20-watt scenario are here. You see that like this. We open this type of sensor. We can simulate that and also control using a PLC ladder program. So it software is very useful over the automation. Okay, then we will start left conveyor. And different types of processes are there. You will see that like sorting it, batching process, level control, then palletizing it, automatic warehouse like processes are here there. You can control write your ladder program and control that in real time using this software. You have any question, ma'am? Hello. 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 Thank you, sir.
for the wonderful session and insightful demonstration. Now I invite Chairperson of this session, Honorable Principal of Vidya Bharati Mahavidyalaya Amravati, Dr. Pradnya Yenkar ma'am, to address the gathering. Am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yeah. Very good afternoon to one and all present here, those who are virtually connected to us. On behalf of Vidya Bharati Mahavidyalaya, I welcome you all and I congratulate you all for attending this state level workshop, which is a virtual one for training in advanced instrumentation for advanced learners, which is organized by our Department of Electronics in collaboration with Department of Electronics of Brijlal Biani Science College. And I really appreciate the partnership which is shared with Variety Traders Amravati, who are the authorized dealer of scientific technologies Indore. I'm really thankful right in the beginning to our co-partners for helping us and for joining us your hands for this cause, for this noble cause. Well, on behalf of Mahavidyalaya, I also take this opportunity to welcome today's speaker, Mr. Praveen Sharma, Senior Engineer Production Scientific Technologies Indore, as well as Mr. Prashant Tomar, who guided us, who enlightened our students on this advanced training in instrumentation. Well, I also welcome and express my gratitude to Principal Dhote Sir, Principal Brijlal Biani, for joining hands for the cause of betterment in technologies. Well, my dear students and participants, Vidya Bharati has always been striving to go with the pace of the time. Technology, no wonder, is making is coming with many changes. Things are changing within a night. You being the students of technological subject like electronics, that to instrumentation, you are required to do constant updating, constant upscaling. आज का जमाना वैसे भी skill, we are living in skilled India. So naturally you need to be skilled enough to go ahead with the time. So I congratulate all of you. I am thankful to Mr. Sharma and Mr. Tom for having accepted our proposal and enlightening all the participants in this regard. We have always tried Vidya Bharati और the departments of Vidya Bharati, हम हमेशा हमारा प्रयत्न रहता है कि हमारे बच्चों को जो भी कुछ करिकुलर स्टडीज होता है, एकेडमिक्स में जो होता है, उसके बावजूद प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो भी एक्सपोजर्स पॉसिबल है, जो भी एक्सपीरियंसेस पॉसिबल है, वो देने का हम हमेशा प्रयास करते हैं. I congratulate Department of Electronics, Dr. Gajbe and her colleagues for coming up with such wonderful idea and for the successful organization of this workshop. I'm sure, I'm very, very sure that the participants who have attended it thoroughly and full-heartedly, they will definitely be benefited. And today, what they gain, the knowledge they gain today will be of great help to them in their future. Thank you, Mr. Sharma and Mr. Tomar for being associated with us. And time and again, हम आगे भी इस तरह का association कायम रखना चाहेंगे, जिसका main cause है the betterment of students. Thank you, the department, Dr. Gajbe, for giving me this opportunity. And I also express my apologies for the changes in timing, because today is a hectic day for me because we already have 2 programs running on our campus. Thank you so much once again. Thank you so much, ma'am, for your presidential speech. As we conclude today's workshop, I would like to take an opportunity to express our gratitude to all of you for your participation. On behalf of Vidya Bharati Mahavidyalaya, I express a special thanks to principal of both the colleges, respected Dr. Pradnya Yenkar ma'am, and Deepak Dhote sir for sharing their valuable time and guidance. I also express special gratitude to our esteemed speakers, Mr. Praveen Sharma sir and Mr. Prashant Tomar sir, for their valuable time and expertise. I also extend sincere thanks
to Brizil Biani Science College, Amravati, and Mr. Vikas Ambadekar sir and Mr. Harshal Hambarde sir, variety traders, for the coordination and the continuous support and commitment to excellence. I express the special gratitude to all the HODs and the staff of various colleges who motivated their students for participation, attending the workshop, and contribution to the success of the workshop. Finally, a big thanks to all the participants for your engagement and enthusiasm throughout the workshop on Google Meet as well as on YouTube. We hope you found the session informative and that the knowledge gained today will aid you in the future endeavors in advanced instrumentation. At last, I am very thankful to whomever contributed directly or indirectly for the successful organization of this workshop. Please do fill out the feedback forms and stay connected with us for future events. We wish you all the best in your continued learning journey. Thank you to all. Thank you from our side also. We are, I and Prashant are really thankful to you that you allow for this wonderful session. Thank you once again. Okay, control करते हैं ना? ठीक है, thank you. हाँ, सुना ना, सुना. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much.